Good morning, class. So, in our last session, I have discussed with you about land breeze and sea breeze. Okay, I hope that that is clear to everybody. Okay, along with that, I have explained you few definitions also. मैंने थोड़े बहुत definitions explain किए थे. वो terms भी तुम लोग को याद है. I hope that also. Okay, and please do write that in your notebook. जो भी definitions मैंने last lecture में करवाए थे वो अपने notebook में लिख लेना. Okay. So let us move on. So the next topic for today is thunderstorm. Okay, thunderstorm को हम दूसरे नाम से भी कहते हैं, that is electrical storm and or a lightning storm. Okay, these two terms also we can use. Okay, instead of thunderstorm. Oh, so here you can see a storm is accompanied. Thunderstorm actually क्या होता है? A storm that is accompanied by lightning, thunder plus rainfall. रेनफॉल भी होता है, लाइटनिंग भी होता है, साउंड प्रोडक्शन भी होता है और स्टॉर्म भी आता है. स्टॉर्म यानी कि अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, वो भी क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं हम थंडरस्टॉर्म. ओके, so this one you can see here, this I have already explained you. This is convection of air. Warm air will rise up. ओके, वार्म एयर क्या होगा? जब भी गर्म एयर होगा दैट विल ऑलवेज राइज अप बिकॉज दे आर बिकमिंग लाइट इन वेट. ये बहुत बार एक्सप्लेन कर लिया, अब तो आ जाना चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू explain again and again in detail. मैं सिर्फ रीड करते जाऊंगी. ओके, सो वार्म एयर विल राइज अप, सो बिकॉज ऑफ लाइट इन वेट, एंड देन ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा जिसके वजह से वो एयर क्या हो जाएगा? कूल डाउन होगा. और कूल एयर हमेशा हैवी होता है जिसके वजह से it will come down and sink. Okay, and the low pressure, here the pressure will be very low because particles are becoming less in, मतलब they are becoming light in weight, और वो ऊपर चला जाता है एक्सपैंड होके, जिसके वजह से वो एरिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है. और कूल एयर जहां पे था, यानी कि दिस एरिया कूल एयर, so from here the wind will blow towards this side. Okay, this I have explained you in land breeze and sea breeze. Okay, I hope that that is clear. ओके, सो द our मेन टॉपिक फॉर टुडे इज थंडरस्टॉर्म. आज का हमारा मेन टॉपिक है थंडरस्टॉर्म. तो हियर यू कैन सी many a times the rain is associated with lightning. रेन किसके साथ अकम्पनीड है? लाइटनिंग के साथ अकम्पनीड है. एंड नॉट ओनली लाइटनिंग, उसके साथ साथ थंडर साउंड भी है, उसको बोलते हैं हम थंडर साउंड. ओके, यू कैन सी हियर द पिक्चर, like lightning is happening. Okay, so storm with lightning and thunder. Storm के साथ साथ lightning भी हो रहा है, thunder भी है, that is known as thunderstorm. Okay, and thunderstorm develop कहाँ पे होता है? Mostly in the tropical region. Okay, already I have explained you about tropical region in your 7th chapter. That is, this is the tropical region. This is Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, and this area is the tropical region where थंडरस्टॉर्म डेवलप. थंडरस्टॉर्म इसी एरिया में डेवलप होता है. ओके, ट्रॉपिकल रीजन्स में. ओके, एंड दिस एरिया इज वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, दैट आल्सो यू पीपल नो. ओके, सो द फॉर्मेशन, हाउ दिस थंडरस्टॉर्म फॉर्म्स, कैसे ये थंडरस्टॉर्म बनता है. ओके, सो लेट अस सी हियर इन समर. समर के टाइम वार्म एयर इज राइजिंग अप. द सेम थिंग मैंने जो आपको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में एक्सप्लेन किया था, जो वाटर साइकिल का प्रोसेस होता है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, सेम वे कंडेंसेशन, कूलिंग डाउन, वहां तक लेके जाना है, मतलब स्टेप्स. उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वो अभी आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू दैट. ओके, थंडरस्टॉर्म कैसे डेवलप होता है. सो वाटर साइकिल का जो प्रोसीजर है, दैट एवरीबडी इज नोइंग, दैट वार्म एयर विल राइज अप, ओके, विथ लॉट ऑफ मॉइस्चर. ओके, एंड वो हल्का हो जाता है, उसकी वजह से वो राइज अप होता है. एंड दिस the rising temperature produces strong upward rising winds. Okay, this way it will move, warm air will rise up. Okay, then जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे, upper layers of atmosphere में जाएंगे, that will start cooling down. condensation process होगा जिसके वजह से जो molecules होते हैं, यानी कि particles होते हैं, that will start sinking down. Okay, यानी कि that will come down. Okay, cold air will always come down. ये procedure everybody is knowing. ठीक है, water cycle का. So वही लिखा हुआ है, in cooler upper layers of the atmosphere, in cooler upper layers of the atmosphere, moisture rapidly condenses into water droplets or they freeze. टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो फ्रीज भी हो जाएंगे,
एंड वो किस फॉर्म में आके फिर गिरेगा, रेन के फॉर्म में भी आके गिर सकता है, और इट कैन फॉल इन द फॉर्म ऑफ हेल स्टोन्स, ओके, इन दैट फॉर्म आल्सो इट कैन फॉल। एंड द फ्रिक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फॉलिंग, ये जो मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस क्रिस्टल्स अलोंग विद द राइजिंग एयर, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि ऊपर से वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं और आइस के क्रिस्टल्स ऊपर से गिर रहे हैं और नीचे से वार्म एयर जा रहा है ऊपर की तरफ, ओके, वार्म एयर इज राइजिंग अप। जब ये दोनों आके कंबाइन हो जाता है या फिर फ्रिक्शन, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से वी कैन हियर द लाइटनिंग एंड साउंड प्रोडक्शन, ओके, इसको बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। एंड मोर डिटेल, योर लेवल, आपका लेवल बहुत ज्यादा कम है, उसके वजह से ओनली दिस मच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। वैसे तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में, कैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर गेटिंग डिस्चार्ज्ड, और कैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ आके अट्रैक्ट होता है, वो सारी चीजें हैं, बट इन योर कोर्स इट इज नॉट देयर, नथिंग अबाउट डिस्चार्जिंग एंड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के बारे में, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, नथिंग इज देयर। ओनली दिस मच यू हैव टू लर्न, हाउ वार्म एयर इज राइजिंग अप, हाउ कंडेंसेशन अकर्स, कंडेंसेशन से कूलिंग डाउन होता है। अब ये दोनों आखिर टकराते कब है, when they both are coming together, यानी कि वार्म एयर ऊपर से आ रहा है, oh sorry, warm air is moving upward, this is your warm air, okay, and ऊपर से rain is coming down and water droplets are coming down और ice crystals are falling, okay। जब ये दोनों आके कंबाइन होता है या फिर टकराते हैं, स्ट्राइक होता है, जिसके वजह से यहाँ पे लाइटनिंग एंड साउंड का प्रोडक्शन होता है, ओके। So here you can read this in the friction due to the movement of the falling of water droplets and ice crystals along with the rising air creates lightning and sound, okay, lightning and sound ऐसे produce होता है। So here you can see warm air is rising up, cool air is coming down and rain is also coming down, so because of this, इसके वजह से we are saying that के thunderstorm, lightning and sound production होता है। एक्चुअल में this is not the correct answer, positive charges are here accumulated here, okay, and negative charges are here। जब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, एक्चुअल में this is the cloud formation occurs because the tiny droplets are combined together, उसके वजह से होता है, वाटर साइकिल में के प्रोसेस में आप लोगों ने किया होगा, राइट। सो हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर हियर, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस है, ओके। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तब दीज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द एड्ज ऑफ द क्लाउड। एड्ज मतलब ये एंड पे चला जाता है, क्लाउड के एंड पोर्शन में चला जाता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, ओके। फिर क्या होता है, दो क्लाउड्स जब टकराते हैं एक दूसरे के साथ, ओके, सपोज अदर क्लाउड्स, सो clouds are becoming very heavy, so they are going towards the edge, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस होंगे, ओके, हमेशा नीचे नेगेटिव होता है और ऊपर के साइड पॉजिटिव होता है, इसके पीछे भी रीजन है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दैट बिकॉज दैट ऑल थिंग्स विल कम इन योर हायर क्लासेस में आएगा। सो नेगेटिव चार्जेस विल बी एट दिस एड्ज एंड पॉजिटिव विल बी हियर, और ये दूसरा क्लाउड है, ओके। इसका पॉजिटिव चार्ज, मैं ऑलरेडी सेड दैट के पॉजिटिव चार्ज हियर, सो व्हेन दीज टू विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर एट दैट टाइम लाइटनिंग और साउंड का प्रोडक्शन होता है। तो आपने सुना होगा कि दो क्लाउड्स जब टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तब जाके साउंड प्रोडक्शन होता है और लाइटनिंग होता है, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे, टकराने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ, उसके वजह से यहाँ पे लाइटनिंग होता है, ओके। आई होप दैट दिस इज क्लियर। दूसरा यहाँ पे बताया था कि वार्म एयर राइज होता है और ऊपर से टाइनी ड्रॉपलेट्स आके गिरते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन और लाइटनिंग होता है, ओके। दैट इज ऑल्सो वन reason of thunderstorm, okay। This I have already explained you about thunderstorm, okay। So here you can see warm air is rising up, cool air is going to take the place of this, and when these two will combine together, you can see the lightning and sound production, okay। Combine means when they will कम टुवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगे तब, या फिर कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, तब वहां पे थंडरस्टॉर्म होता है, ओके। So let me read this. Difference in the temperature between the two regions, set convection there. Yes, I have already explained you about land breeze and sea breeze. उसमें convection in the air मैंने explain किया था। Warm air will rise up, जहां से warm air rise होता है वहां का pressure low हो जाता है, और जहाँ पे cool air होता है वहां का cool air क्या करता है, फिर वहां से जहाँ low pressure area था वहां वो उसके it will move towards that side, okay। This already I have explained you, okay। Warm air will rise up
वार्म एयर क्या करता है? प्लीज डू वॉच माय प्रीवियस लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के वीडियोस, देखो तो ही ये समझ में आएगा तुम लोग को। वार्म एयर राइजेस, कूल्स, ऊपर जाएगा, कूल डाउन होगा, टाइनी ड्रॉप कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। अब जो बहुत ही बड़े बड़े बिग ड्रॉपलेट्स होंगे दैट विल फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेलस्टोन एंड स्नो। ओके, अब जब नीचे आ रहे होते हैं ये टाइनी ड्रॉपलेट्स, तब ऊपर से वार्म एयर जा रहा होता है ऊपर की तरफ। ओके, वार्म एयर इज राइजिंग अप and these rain tiny droplets are coming down. These two will come towards each other and they will start striking each other. These particles will strike with each other, and in this way you can hear the lightning sound. That's what it is written. They collide with each other and also with the air that is rising up. Because of that you can hear the thunderstorm. Okay, so storm with thunder and lightning is called thunderstorm. Thunderstorm kya hota hai? A storm with thunder and lightning. Storm means a very strong wind. Okay, so you can see thunderstorm is happening. ये सारे नुकसान हुए हैं, you can see that because of thunderstorm. So here are some precautions to be taken during thunderstorm. बहुत सारे precautions हैं यहाँ पे तुम्हारे पास, you can read it. Okay, it is given in your textbook also. You do not take a shelter under a isolated tall tree. Tall tree के अंडर में कभी भी shelter मत लेना. You should take shelter under a small tree. Do not lie on the ground. Do not take shelter under an umbrella because umbrella का जो handle होता है that is made up of metallic and उसके जो sides में होते हैं that is also metallic. जल्दी से वो attract कर लेगा positive negative, मैंने बताया था आपको वो. Do not sit near a window. Window के पास में मत बैठो. Open garages, open garages और storage sheds, जो मेटल शेड्स होते हैं, दे आर नॉट सेफ प्लेस. ये कोई भी सेफ प्लेसेस नहीं है. कार में नहीं. इसे वेयर शुड बी टेक अ प्लेस दैट इज अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. कहाँ पे सेफ प्लेस है? अ कार और अ बस, दैट इज अ वेरी सेफ प्लेस. यू कैन टेक शेल्टर इनसाइड दैट. ओके, शेल्टर बना सकते हो उसको. अब okay, whenever thunderstorm occurs. Okay, if we are in water we should not get out. अगर हम लोग if we are in water we should not get out or go inside a building. Okay, अगर पूरी तरह हम लोग गीले हैं तो वी शुड गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग. फटाफट से हम लोग बिल्डिंग के अंदर जाना है. ओके, अगर हम लोग गीले हो तो. ओके, डू नॉट टच. और कभी भी स्विचेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, टेलीफोन्स, वो सारे इलेक्ट्रिकल चीजें जो होते हैं उसको टच ना करें. दैट वुड बी बेटर. ओके, एंड डोंट वेयर ऑर्नामेंट्स ऑल्सो. गोल्ड, सिल्वर, ऐसी सारी चीजों में जल्दी से अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से प्रोड्यूस होता है. ओके, सो दीज आर द प्रिकॉशंस you should take during thunderstorm. Okay, so the next one is cyclone. Cyclone I have already the same things. Thunderstorm का आधा एक पार्टी है cyclone भी. Thunderstorm में कैसे मैंने warm air rises बताया, the same thing is going to happen in cyclone. Okay, steps are remaining same. Steps जो होते हैं वो same ही है cyclone में भी. Okay, so here you can see the picture. Cyclones are usually formed overseas. Okay, seas में होता है mostly, and that too in the ट्रॉपिकल एरिया नियर द इक्वेटर. वो भी इक्वेटर एरियाज में ही होते हैं मोस्टली साइक्लोन भी. ठीक है, यू कैन सी द इक्वेटर रीजन. दिस इज द इक्वेटर रीजन वेयर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज देयर, एंड यहीं पे साइक्लोन भी, साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है यही रीजन्स में मोस्टली. ओके, यू कैन सी दी, यू कैन सी दिस एरिया. ओके, you can see how cyclone formation occurs. You can see the eye also, and I'm going to explain what it is. Okay, all the things I'm going to explain you कैसे ये फॉर्मेशन होता है. सो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, द सेम स्टेप्स. ओके, जैसे वाटर साइकिल में जो स्टेप्स थे, सेम स्टेप्स बट लिटिल बिट डिफरेंट है साइक्लोन में. ओके, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन आज मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ. प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, so here cyclones are usually formed overseas in a tropical area near the equator. Suns heat the ocean water. Sun क्या करता है? ocean water को गर्म. oceans में mostly होता है. ocean में वो energy है, उसको high pressure low pressure का जो प्रोसीजर अभी मैं समझाने जा रही हूँ, वो ocean में वो energy है कि वो हो सके वहां पे center of eye and all that. Okay, so sun heats the ocean water. Water evaporates into वाटर वेपर. वाटर क्या करता है? वाटर वेपर में बदल जाता है. एंड सन ऑल्सो हीट्स द एयर ओवर द सी. और सी के ऊपर जो एयर होता है उसे भी वो हीट अप कर देता है. ओके, वार्म एयर
that already we know that warm air is always rising upward. वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाता है और वहां का प्रेशर क्या हो जाता है, ऊपर वार्म एयर जाएगा तो वहां का प्रेशर ऑब्वियसली लो हो जाएगा, और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, इट विल स्टार्ट कूलिंग डाउन। ओके, वाटर वेपर कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, और जिस एंड फॉर्म थिक क्लाउड्स, बहुत ही ज्यादा थिक क्लाउड्स बनाएंगे, एंड एट दैट टाइम ऑल द हीट विल बी रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। वापस से सारा हीट रिलीज हो जाएगा और वार्म कर देगा सराउंडिंग एरिया। ओके, एंड वार्म एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉजेस फर्दर ड्रॉप इन द प्रेशर। फिर से वार्म एयर ऊपर राइज होगा और वहां से वहां का प्रेशर फिर से कम हो जाएगा। मोर एयर फ्रॉम द हायर प्रेशर रशेस इनटू द सेंटर। उसके बाद क्या होगा, ये साइकिल कंटिन्यू होते रहेगा। वार्म एयर विल राइज अप, वहां का प्रेशर कम हो गया, देन इट विल कम डाउन, वहां पे थिक क्लाउड्स तो बन गए, टाइनी ड्रॉपलेट सारे इकट्ठा होके, देन कूल एयर विल कम डाउन, देन वहां का प्रेशर हाई होता है, तो हाई प्रेशर से क्या होगा, मोर एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर rush to the center of the storm, and this cycle is repeated. How the cycle is repeated, that I'm going to explain you. You can see here, you can see this picture, right? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है, एक्चुअली ये फॉर्मेशन ये बता रहा है कि वार्म एयर इज राइजिंग अप। वार्म एयर जब राइज होगा तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, वहां का प्रेशर हो जाएगा लो। ओके, तो उसकी जगह तो किसी को लेना चाहिए, हाई प्रेशर को फटाफट से आके एयर मॉलिक्यूल्स, हाई प्रेशर शुड टेक प्लेस ऑफ दिस, राइट, हाई प्रेशर एयर। ओके, बट उसके जगह पे व्हाट इट इज डूइंग इज दैट वो उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करने लगता है। यू कैन सी हियर, इट विल स्टार्ट रिवॉल्विंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग द प्लेस। जो वार्म एयर की जगह पे what he is doing, what this air particles are doing, high pressure wind जो है that is start revolving around it, it starts revolving around it. Okay, warm air has risen up. ओके, तो यहाँ का प्रेशर लो हो गया, तो हाई प्रेशर यहाँ से आ तो रहा है, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्लेस ऑफ दिस, व्हाट इट इज डूइंग, क्या कर रहा है वो, इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग हियर। ओके, यू कैन सी हियर, मैंने तुम लोग को समझाया था कि हाई प्रेशर यहाँ से आएगा, हाई लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो पार्टिकल्स आके हाई लो प्रेशर की जगह ले लेता है, बट जगह लेने की जगह पे व्हाट इट इज डूइंग, इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। ओके, you can see here how it is revolving and making a center, high के जैसा center बना देता है। Okay, so here you can see how it is making, you can see how it is rotating, high pressure area cover कर रहा है यहाँ पे। Let me show you again. So here you can see high pressure area is being covered. Okay, wind is blowing away, यहाँ पे प्रेशर तो लो हो गया, प्रेशर लो हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए हाई प्रेशर विंड को लेके आता है ना, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग देयर। ओके, सो व्हाई इट इज हैपनिंग दैट आई विल एक्सप्लेन यू। आई होप दैट दिस इज क्लियर। यू कैन सी हियर वार्म एयर राइजेस अप, it is rising up, then what is happening in the upper layers of the atmosphere, it starts cooling down, and condensation occurs, condensation process होगा and form very thick clouds, and ये thick clouds में से फिर heat release हो जाएगा, heat will start releasing, and the released heat further warms air, फिर से ये गर्म कर देगा पूरे एयर को। ओके, अगेन वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, फिर से वार्म एयर, जहां से वार्म एयर राइज अप होता है वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर वहां का प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, सो हियर यू कैन सी डेवलपिंग द लो प्रेशर। ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर, जहां से वार्म एयर राइज होता है वहां का प्रेशर कम हो जाता है और उसकी जगह हाई प्रेशर विल कम एंड बैलेंस दैट, बट इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंस करने के जगह पे ये तुम लोग ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हाई प्रेशर लो प्रेशर बैलेंस करने की जगह पे व्हाट इट इज डूइंग एक्चुअली, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग, यू कैन सी दैट। ओके, यू कैन सी द पिक्चर हाउ इट इज रिवॉल्विंग हियर। ओके, यहाँ पे सब हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर मतलब एयर पार्टिकल्स हो रहे हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं, इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग हियर अराउंड इट। Okay, so here you can see how it is revolving. These are the high pressure, instead of taking this particles की जगह लेने की जगह पे what it is doing, the wind starts revolving, this is the wind that starts revolving around the center. Okay, so let me read this, more and more air rises up higher, बहुत ज्यादा air rise up होगा because of the sun's rays, and more thick clouds all around, थिक क्लाउड्स बनने लगी है, बहुत ज्यादा थिक क्लाउड्स। ओके, सो मोर एंड मोर एयर रशेस, जितना ज्यादा ऊपर एयर जाएगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ओके,
I hope that this is clear. The wind is moving towards this and wind will start revolving around the center. This is known as Coriolis, यानी कि Coriolis effect. इसको बोलते हैं Coriolis effect. जब उसकी जगह लेने की जगह पे what it is doing, it starts revolving. Okay, you know, now I already explained you how the wind is blowing from land to breeze and it is taking place here and it is balancing the pressure को balance करता है, wind को balance करता है. But यहाँ पे क्या हो रहा है? The chain of the event ends in the formation of very low pressure system with very high pressure winds revolving around it. Okay, यहाँ से warm air is rising up, यहाँ का pressure कम हो गया, तो यहाँ पे wind को आके it should take the place of this, right? Instead of taking the place, what it is doing, it starts revolving around it. Okay, so once the maximum wind speed is 119, the storm is classified as tropical cyclone. Tropical cyclone कब कहा जाता है? जब उसका जब विंड का स्पीड होता है, विंड रोटेट कर रहा है ना ऐसे. राइट नाउ यू सॉ दैट कि विंड इज रोटेटिंग, बट विंड इज रिवॉल्विंग अराउंड इट. लेट मी शो. विंड यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है. अगर इसका स्पीड अगर 119 से ज्यादा है, 119 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो, तो उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन. ओके, मोर एंड मोर एयर विल राइज अप हायर एंड हायर इन द एटमॉस्फेयर और मोर एंड मोर थिक क्लाउड्स ऑल अराउंड. ओके, थिक क्लाउड्स बनेंगे वो रीजन में. यू कैन सी ये रीजन में पूरा थिक क्लाउड बनेगा एंड मोर एयर विल रश. ओके, मोर एयर विल रश इनटू इट. ज्यादा ऊपर जाएगा, लो प्रेशर होगा ज्यादा, जिसकी वजह से मोर विंड विल come to this area और ऐसा formation होगा. Okay, I hope that cyclone is clear. Okay, you can see the center of the eye also. So I'm winding up here. I'll continue this in the next session. Okay, so please do pause my video, try to understand what I was explaining you in this session. Okay.